Three metal plates are given, charge minus q and plus 2q. Question is, find the charge appearing on the outer surface of the leftmost plate. लेफ्ट वाली प्लेट पर चार्ज हमको बताना है यहाँ कितना आएगा. तो मैं जूम कर लेते हैं. लेट सपोज चार्ज q आ जाता है. सो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज माइनस q, मेटल प्लेट्स पर आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए. इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पर चार्ज आएगा प्लस q, because it is neutral plate, charge must be 0, so minus q. Either facing surface plus q, from conservation of charge 2q minus q plus q, so it is q minus q. हम इसको ऐसे देख सकते हैं, चार्ज q, इधर माइनस q प्लस q, इधर q प्लस q, अगेन माइनस q प्लस q, अगेन q प्लस q, at last this is q minus q. So it is positive, we are taking positive, this is negative, this is positive, negative, positive, positive. It depends on value of q, but we are assuming it is positive, it is negative, positive, negative, positive and positive. For these type of questions, just take a point P inside any plate. Let's suppose a point P is taken inside this plate. एक पॉइंट यहाँ पे लिया हमने P. इस P पॉइंट पर, क्योंकि ये P पॉइंट हमने प्लेट के अंदर लिया हुआ है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करेंगे ड्यू टू ऑल द सरफेसेस. So due to this charge, electric field at point P plus q, positive है, point outside away from the charge. So this k q is sigma into a plus q, या फिर हम कह सकते हैं electric field is sigma by 2 epsilon naught. So it is q by a 2 epsilon naught. डायरेक्शन ये रहेगा, डायरेक्शन शो करके चलना है हमको. अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव पॉइंट P टुवर्ड द चार्ज. सो इट इज q प्लस q बाई a 2 एप्सिलॉन नॉट. डायरेक्शन ये रहेगा. एरिया सबका सेम है, बस हमको डायरेक्शन देखना है. चार्ज का साइन नहीं लेना है, केवल हमको डायरेक्शन लेनी है. नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन towards the charge, then again positive, point यहाँ पर है away from the charge. So q plus q by 2 epsilon naught away from the charge. This is negative towards the charge. Charge यहाँ पर है, point यहाँ पर है. Direction q plus q by a 2 epsilon naught. Direction towards the charge particle. Due to this charge, positive charge, point P away from the charge. So q plus q by a 2 epsilon naught. Direction, charge ये है, point ये है, away from the charge. This is also positive, away from the charge. So q minus q, a 2 epsilon naught. This must be 0. Just add all these with proper sign convention. So let's suppose it is positive. So this is positive, this is negative, positive. Cancel out करते चलेंगे. q plus q by 2 epsilon naught, q plus q by 2 epsilon naught, q plus q by 2 epsilon naught. If it is positive, so q by 2a epsilon naught minus
q minus q by 2a epsilon naught equals to 0. So now we can take 2 epsilon naught cancel out, q minus q plus q. So it is q minus q plus q equal to 0. So capital Q equals to q by 2. So charge on the leftmost plate is q by 2. Capital Q equals to q by 2. इसका एक alternate method भी है, we can do it also alternate. In this method just add all the charges. So total charge is minus q plus 2q, then divide by 2. प्लेट कितनी भी हो सकती है, 3 4 5, हमें डिवाइड बाई 2 ही करना है. सो इट इज q बाई 2. इस चार्ज को सभी प्लेट्स के, इस प्लेट का ये साइड लेफ्ट मोस्ट एंड दिस इज राइट साइड, यहाँ पर डाल देना इसको. So q by 2, this is q by 2, and then by charge conservation, charge on this side, this is q by 2, so this charge is minus q by 2, so minus 3q by 2, this is plus 3q by 2, minus 3q by 2, plus 3q by 2 and q by 2. This is the complete charge distribution on the metal plates. Okay.